Am I live? I am live. Hello everyone. क्या हाल? Oh, sorry. Hello everyone. क्या हाल? एक second. I'm just trying something new. Just be a little bit patient with me, ठीक है? Bonfire तो ready है, but I'm just trying to sort everything out. हाँ, fix हो जाए बस. आप लोग जरा मेरे को बताना, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? चैट्स में यहाँ से ले लूंगा. Everything is an experiment. I hope you guys can see me. Very clear. Audio is very clear. So this is working then. Uh, hello, Manas. Happy Makar Sankranti. Hello, KV Saab. Hello, Rhythm. Thank you so much for joining. Hello, Manas. Hello, Arnav. Hello, good evening. Big semi-final first leg today. Yes, guys, 12:30. We're gonna have our first हमारा watch along होएगा उस time पे. And before I take any other chats, I have a very bad news to report. मैंने एक full chicken तंदूरी और एक full chicken टिक्का मंगाया था, जो Zomato वाला खा गया, and वो अब मेरा phone नहीं उठा रहा है. So I had to deal with that, and I was very upset. I don't like to get upset before a nice little bonfire party. But yeah, that happened. K bro at Reacts Angiti बढ़िया है and आज the wood is and also we might have some so that is also something that's going to happen. We might have a new guest. I've invited Rajat Dang. Dang, how do you pronounce that? I'll just call him Rajat. He's a Spurs fan. He lives in the United States. I don't think you guys know him or something, but I was like, you know what? It'll be nice to talk to someone. इसलिए मैंने headphones पहने हुए because he might join us at around 8:15, 8:30. What's up, Holy Trinton? Hello. Yes, के भाई नमस्ते नमस्ते आयुष. Thank you so much for joining आयुष. कैसे हो? Manas कह रहा है yes, your new mic is great. के भाव. Can you imagine? I got this for like 450 rupees. 450 रुपए का. I think that's a great deal if the audio is good. इसी आग में जला दो उसे was the issue is resolved. I have received a refund, but अभी बस 5 मिनट पहले refund आया है. And मैं इतनी देर से भाग रहा था कि मैं आग लगाऊं कि मैं अपना चिकन टिक्का और अपना तंदूरी चिकन लेने जाऊं. But the good news is that after requesting Zomato the second time, they actually provided a refund in 2 minutes. 5 मिनट में refund दे दिया, which I'm very happy for. And now I have reordered the food. So the food is going to come. So I'm very happy. Also, guys, cheers to everybody of age. Cheers, cheers, cheers. और कंप्लेन कर दो. जो के भाई को अपसेट करेगा उसको जुलाब होंगे. मेरा श्राप है. स्विगी इज फार बेटर, जोमेटो वर्स्ट. परफेक्ट. आई थिंक सब बढ़िया चल रहा है गाइज. आज की जो लकड़ी है ना, ये थोड़ी सी अलग है. दिस इज जैसे कल जब लोहड़ी हुई थी, तो उसमें से जो लकड़ी बची थी, ये वो वाली है. तो ये काफी बड़े हैं वुड पीसेस. क्या कह रहा है जो स्विगी इज फार बेटर देन जोमेटो. जोमेटो इज वर्स्ट. आई हैड अ फाइट विद जोमेटो वंस टू. मैंने सोबर होके गाली दी थी. ओहो. केवी रिएक्ट्स चार्ल्स कह रहा है केवी रिएक्ट सेम जोमेटो वाला होगा, दोबारा खा लेगा. नहीं 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 नहीं, इस बार मैंने रेस्टोरेंट को डायरेक्टली फोन करा. एंड रेस्टोरेंट वाला नोज मी. तो ही सेड ठीक है, मैं भिजवाता हूँ आपको, आप चिंता मत करो. मैंने कहा ठीक है, ओके. बिकॉज ही नोज आई लव हिज फूड.
एंड एक्चुअली मानसून के टाइम में यहाँ पे ब्रिज टूट गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक जैम बढ़ गया, बिकॉज देव मेड अ कच्चा रास्ता एंड वहाँ पे जैम होता रहता है। आई हेट ट्रैफिक जैम्स। द नंबर वन थिंग दैट आई हेट इन लाइफ इज ट्रैफिक जैम्स। कितना टाइम वेस्ट करें हम गाड़ी में बैठे बैठे ट्रैफिक जैम्स में सड़क पर। आई जस्ट कैनॉट टॉलरेट इट, तो मैं वापस आ गया। एंड देन आई वाज लाइक कि जोमेटो से ऑर्डर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कलेश हो गया, एंड देन ही वाज लाइक, देन मैंने फिर रेस्टोरेंट को फोन करा, मैंने बोला कि हाँ हाँ रिफंड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ करो अब। तो बोला, हाँ ठीक है मैं भिजवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आयुष कह रहा है देहरादून में हो क्या आप? हाँ हाँ मैं देहरादून में ही हूँ मेरे भाई। यू तो नो दिस, यू नो दिस। दिनेश कह रहा है कि वो जोमेटो वाला चेल्सी फैन होगा। ओह वाओ, वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। वो जोमेटो, हेलो के भाई, आज लकड़ी अलग है, टुडे इट इज वुड। दिस सीम्स वे बेटर देन प्रीवियस बॉनफायर। आई इट इज बिकॉज मैं शाम के 5 बजे से ये शॉट रेडी करके रखा हुआ था, दैट आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई वाज लाइक प्रिपेयर्ड कि इस तरीके से करना है। एंड गाइस, अगर आपने स्ट्रीम नहीं लाइक करे, प्लीज स्ट्रीम जरूर लाइक कर देना। ये एक छोटा सा काम आप बस मेरे लिए कर लो, एंड उसके बाद वी कैन गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन गाइस वांट टू हैव। चेल्सी आर्सेनल का मैच है, सेमीफाइनल है, कैराबाओ कप है, और बहुत सी सारी चीजें चल रही हैं इन द फुटबॉल वर्ल्ड, सो देयर इज लॉट्स टू डिस्कस। उसके ऊपर ये वेनेजुएला वाली सिचुएशन चल रही है, डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। एंड अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की बात चल रही है। तो देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, देयर सो मच टू टॉक अबाउट डोमेस्टिकली ऑल्सो। आई एम श्योर यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। मतलब मैंने तो ये बॉनफायर इसलिए लगाया था कि एक ऐसा सा एटमॉस्फेयर बने दैट वी कैन जस्ट हैव अ रैंडम कॉन्वर्सेशन, like a bonfire stream is supposed to be just relax and enjoy. Hello, hello, Red Devils. Dinesh, what's up? How's it going, Red Devils? Thank you so much for joining. केवी भाई को बड़ी अच्छी लगती है। यस ट्रू। होली ट्रिंटन कह रहा है रेस्टोरेंट नेम। रेस्टोरेंट तो बढ़िया है, रेस्टोरेंट इज गुड, भाटिया ढाबा करके है। यू गाइस वोंट बी सरप्राइज्ड कि ठेके के बाजू में ही है, बट आजकल मैं उस ठेके पे जाता नहीं, मैं दूसरे ठेके पे जाता हूँ क्योंकि वो ब्रिज टूटा हुआ है एंड वहाँ पे ट्रैफिक जैम लग जाता है। पर मैं खाना वहीं से, स्नैक्स वहीं से ऑर्डर करता हूँ हमेशा, बिकॉज आई ट्रस्ट दैट गाय, आई नो हिम। भाटिया ढाबा वेरी गुड रेस्टोरेंट। मेरे लिए तो पर्सनली उसका चिली मशरूम, उसका तंदूरी चिकन, उसका चिकन टिक्का, चिली पनीर, सॉरी पनीर टिक्का, ये सारे आइटम्स मैं उससे ऑर्डर करता हूँ, एवरी सिंगल टाइम ही नेवर डिसअपॉइंट्स। लास्ट वाले बॉनफायर में भी उसने 2 फुल चिकन टिक्का सर्व किया था, एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई लव द गाय। एंड आई थिंक द जो बंदा उसको संभाल रहा है, ही इज ऑल्सो लाइक लगभग मेरी एज का ही है, सो लव इट। Aesthetic always on point. Absolutely. Don't you guys like this? Like this is a pretty good background, I would say. आयुष कह रहा है कि मेरा दोस्त रहता है वहाँ कैंट एरिया में, कभी आया उधर तो मिलते हैं। एब्सोल्युटली। यू जस्ट आप यू तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यार, आप यू जस्ट पिंग मी एंड वी कैन मेक अ प्लान, वी कैन सिट डाउन, खाना वाना खाएं। चार्ल्स कह रहे हैं कि ये कलसांग कैफे के खाने को कितना स्टार्स होगी भाई, इज इट गुड? हाँ, ओके, कलसांग इज इंटरेस्टिंग बिकॉज कलसांग यूज्ड टू बी अमेजिंग। ठीक है, बट अभी वही होता है ना, लाइक दिस रेस्टोरेंट इज वेरी फेमस and after that the quality starts dipping. Everybody who comes to Dehradun is like Kalsang, Kalsang, but there are local restaurants. Tibetan market है राजपुर रोड के पास, सॉरी Tibetan town है राजपुर रोड के पास, amazing amazing food, way better street food, amazing. आपको बन टिक्की खानी है, बन टिक्की तो आप कहीं पे भी खा सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज या सॉरी टिबेटन जो एरियाज है या नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज है, they are very good at serving that northeast cuisine. Your dumplings, momo, थुक्पा, ये सारी चीजें अमेजिंग। अगर आपको वेज खाना है तो वेज में इन देहरादून देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड तिरुपति रेस्टोरेंट, दैट इज नोन टू बी वेरी गुड। मैंने उसका खाना खाया नहीं है बट एवरीबडी वाउचेस फॉर इट। उसके अलावा
ईरान ने बोला था कि टंडन मोमोज पे जाके मोमो खाना, दैट इज द बेस्ट मोमो प्लेस इन देहरादून। तो मैं गया वहां पे, मैंने खाए, फैंटास्टिक फैंटास्टिक अमेजिंग। देहरादून में हो क्या? हाँ जी बिल्कुल। कितने स्टार्स दूंगा मैं कलसांग को? मैं आई गिव देम अ 3.5 बिकॉज आई मीन इट्स गुड फूड, ठीक है, बट नॉट वाओ कि घर पे बनाया हुआ खाना नहीं। अर्पित झा इज हियर, कह रहा है कि सही है कि भाई इतनी ठंड में बॉनफायर और हाथ में एक हॉट चॉकलेट का कप तो मजा आ जाए। एब्सोल्युटली अर्पित, आई कंप्लीटली अग्री विद यू, दिस दीज आर द काइंड ऑफ स्ट्रीम्स आई लव टू डू। मैं ये आग पिछले 1 घंटे से लगा रहा हूँ ताकि जब स्ट्रीम चालू होए तो आई डोंट हैव टू बी रशिंग कि ओ गरम करो, फूंक मारो, ये वो करो, बट आई थिंक ड्यूरिंग द स्ट्रीम आई विल हैव टू डू दैट। बट यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक जब स्ट्रीम चालू होती है तो आग लगी भी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एंड केवी सेट होना चाहिए। जस्ट किडिंग। जब ठंड चली जाए तो यहीं पे सेटअप करना। नहीं, कांट डू इट, कांट डू इट, शोर जाएगा। तुमको तो पता ही है मैं कैसे रिएक्शंस करता हूँ, कितना चिल्लाता हूँ वगैरह। आई डोंट नो, लाइक जो लोग मेरे आते हैं मेरी स्ट्रीम पर, दोज पीपल माइट नो कि आई गेट क्रेजी, मैं गालियां वालियां बक रहा होता हूँ, एंड आई कांट डू दैट बालकनी में खड़े होके, वरना लोग बोलेंगे कि भाई कैसा चूतिया आदमी है। कि भाई आई से आज फुटबॉल की बात छोड़ देते हैं, लेट्स कन्वर्स अबाउट लाइफ, प्लीज प्लीज गाइस। मैं फाइनल चैट लेता हूँ, फिर मैं एक और लकड़ी डाल दूंगा इसमें, एंड देन वी कैन बिगिन। मानस कह रहा है, इवन द ईरान एंड द सऊदी यमन सिचुएशन, बट आई डोंट थिंक यूट्यूब विल अलाउ अस टू डिस्कस जियोपॉलिटिक्स। फक यूट्यूब, ठीक है, लाइक वी कैन डिस्कस एनीथिंग, whatever you want to discuss, like guys, I mean, not just fuck YouTube, but YouTube allows people to discuss anything they want as long as they don't cross a line where trying to instigate something. You understand? Discussion, um, even if it's a little bit argumentative, is allowed. But if you are instigating something, I think that is, you know, like people question that. So as long as we're having a discussion, we can have that. That's absolutely fine. We can discuss anything on the planet, but let's not instigate anything. Let's not hurt anyone's sentiments. Let's not say something crass. Let's just give our opinions and what we think about it, and try not to cross a line. You know, like that's the classy way of doing it. So let's keep it at that. uh, आयुष कह रहा कि भाई ये बॉनफायर स्ट्रीम एक बार जून की दोपहर में दिल्ली में करना प्लीज। हाँ, आई थिंक पुराने जमाने में उसको सती कहते थे। इतनी जल्दी नहीं केवी, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। क्यों भाई, क्यों? व्हाई डिड आई डू दैट? Sorry for that. Speaking of crossing a line, that is crossing a line. So I apologize. I sincerely apologize. Prathamesh, hello Prathamesh, how are you? रौनक इज हियर, कह रहा है कि केवी आज रोजनियर आग बुझाएगा आर्सेनल की। केवी भाई हाउस टूर, केवी भाई आज हाउस टूर नहीं हो सकता यार, सब घर पर हैं। यू नो, लाइक आई कांट डू दैट नाउ। अगर आप हाउस टूर आज नहीं हो पाएगा गाइस, सॉरी। दिन के टाइम में कहते हैं, मैंने एक बार करी है, अरे प्रॉपर हाउस टूर क्या, मैंने पूरा एरिया टूर करा है। तो वो है स्ट्रीम। रौनक कह रहा है कि वी वांट टू डिस्कस अबाउट उत्तराखंड राइट नाउ, नेचर एंड स्टफ। हम्म उत्तराखंड इज ब्यूटीफुल बट इट इज बीइंग रूइंड। एक तो जब आप चार धाम की यात्रा पे जाते हो, एंड पीपल हु कैनॉट वॉक, दे हैव टू टेक दोज
mules like donkeys, उनका सहारा लेना पड़ता है, and those donkeys are like abused, they are tortured, उनकी हालत खराब हो जाती है बेचारे. Like I'll tell you something, I love a donkey. जब मैं retire होऊंगा अपनी life में, then I want to have at least 2 or 3 or 4 maybe pet donkeys. I want to have farm animals around me. I want a little bit a small farm यहीं पे mountains में, and I want some farm animals with me. Donkeys are very smart, intelligent creatures. I don't know why लोग बोलते हैं कि तू गधा है. Donkeys are smart, emotionally intelligent creatures. एंड जो उनके साथ होता है उन यात्राओं पे, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव होता है, इट बॉदर्स मी. ठीक है, लाइक someday if I'm able to do something, if I'm able to help them out, I'll try to do something. But then again वही क्वेश्चन आ जाता है, it's the livelihood of those people also. But there can be other things ना, like आपने बनारस में केबल कार्स बना दिया, आपको आपसे यहाँ पे केबल कार्स नहीं बनाए जा रहे. Cars it cannot reach by road because people have refused to build roads there. They're like कि जाना है तो केबल कार से जाओ. That is the only way of transportation. आपकी opinion on people who are supporting Gaza but are pin drop silence about Iran? That is a very loaded question. Ronak, one thing I will say, because we are speaking from the heart, I will say that that movement which is called Gaze for Gaza, the LGBTQ community supporting Palestine, that is questionable. Uske alawa, like, I mean, you can laugh at that or whatever, but it is a very harsh situation. I'm not going to laugh about it. I'm not going to pretend that I know everything about it, but I try to stay away from it because I know it's a very sensitive subject. But yeah, some of those things are a little bit sus. We want to discuss Makar Sankranti is my favorite festival as I come from Gujarat, where kite flying is a big deal for 2 days straight. But now I'm in Canada, I miss my city. यहाँ पे आज kite flying हुई थी. मैं बाहर निकला था अपनी balcony में. People were flying kites because we're in a school, right? So the kids were flying kites, and so that was there. And I it was after a very long time I actually saw a kite because usually होता नहीं है. So it was nice to see. Um, guess who's back? I have a small request. Nathan on this channel has started doing a men's mental health stream, and he does it once a month. If possible, I would love you to join him on a stream of. See, Manas, I'll be very honest about my own mental health issue. I have bipolar disorder. I have it because my father had it, and before that, my grandmother also had it. So I am not very new to mental health issues. अभी तो ठीक है, but later on in my life, it's definitely going to come up. Uh, मैं गया था उनकी स्ट्रीम पे एक बार मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए. And yeah, it's a deep subject. It's a subject जिसकी कोई आसान दवाई नहीं है. I feel you it is what it is kind of a thing. How do you deal with that? तो क्या बोलूं मैं, like I was always worried initially. पता है कि अगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूंगा, मैं किसी को बोलूंगा कि मैं थेरेपिस्ट को देखता हूँ या फिर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गया हूँ, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बोलेंगे पागल है, बिल्कुल संकी है, ये वो है. बट नाउ आई मैं ये लेवल होता है ना, अब मैं लेवल से मैं यहाँ जा चुका हूँ. नाउ आई डोंट केयर. अब किसी को बोलना है कि ये पागल है, ये संकी है. हाँ, मैं संकी हूँ, मैं पागल हूँ, दूर रहो. स्टे अवे. सो दैट इज द लेवल वेयर आई. Guess who's back? Welcome. And guys, please stream भी like करते रहना guys. Guess who's back? Ray लेके rants. Manas says, अच्छा वो ले लिया मैंने. Baddy Ansh. Last time you had Bonfire, you played shit KVY. Hope you win this one. Thank you so much. Thank you so much for that. Appreciate it. कौन सी ट्रीम है हाउस टूर वाली? uh, जब मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का वो कर रहा था, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड का वॉच पार्टी कर रहा था, उसमें है. यू कैन चेक दैट आउट. Ayush says, Manas bhai, mental health is a heavy topic and should be discussed with a professional. To be honest, stream pe discuss karna is okay, but not great. Arey, it's okay. Baddy answer saying it's not rage bait KV. I'm genuinely saying that. I understand. I understand, buddy. Salve, hello. Donkeys make great guards. Thank you so much. Manas keh raha hai, although my field is surgery, but years back, this topic of men's health was never discussed and I suffered alone. And I have judged you as a person who has the right balance of both right and wrong.
Hmm. I'm actually surprised that uh, I am in any way considered as a balance of right and wrong. I don't know. Like I am just existing. I this is brain says this. I do. Like I don't think. I do think. I think a lot. Like when I'm not speaking and when I'm like resting or watching a show, I'm like thinking, you know what? Maybe this could have been discussed differently. Maybe that could have been said in a different way. Maybe a certain subject could have been approached in a different way. And I do think about these things, but then eventually I tell myself, you know what? You said it. You said it. That's what you actually felt, and it's done. What's the point of going back and trying to defend it? Ho gaya. Just go with it, run with it. Adopt Jim Ratcliffe, Glazers, and that stupid director in your donkey farm. It's not a donkey farm, Rhythm. It's not a donkey farm. Rajiv Kerai, match day. It is. K bye. How are you, Rajiv? Hello. Thank you so much for joining. All the best to you. All the best to us. Leg one. Guys, don't forget 12:30 a.m. The watch along is going to start. Okay, so if you guys are awake, you're more than welcome to join. If you're not, that's fine. But I will be there 12:30 a.m. Hopefully, Varun and Vivek Bhai is also going to be joining us. So वो भी होएगा. What do you think the chances of Arsenal bottling the league again? I don't really want to answer that question. Ronak says, sorry for asking, didn't mean in another way. Indeed, sensitive topic. All I want people to stay safe, irrespective of religion and geography. I agree. I agree. And you don't have to worry about asking questions to me, of all people. Trust me. Ask me anything, anything, except don't get really, really weird. If you get really weird and I'm like, वो नहीं जवाब देना मेरे को. आयुष कह रहा है कि भाई मत करो इस टॉपिक पे बात सबका अपना ओपिनियन ऑन गाजा एवरीवन इज आइदर कंप्लीटली रॉन्ग ओनली इजराइल एंड पैलेस्टाइन पीपल ऑन द ट्रू अग्री वी थिंक वी अंडरस्टैंड वी डोंट अंडरस्टैंड हमारे सर पे बम नहीं फट रहे तो एंड हमारे घर तहस महस नहीं हो रखे हैं हमको ये नहीं ढूंढना कि खाना कहाँ से खाएंगे ये क्या होगा वो क्या होगा इतना दैट इज दैट इज डीप स्टेट स्टफ जहाँ पे वो सब जो भी हो रहा है आई हैव टू से वैसे साइड में कौन सी बियर है किंग फिशर स्ट्रॉन्ग दिनेश कह रहा है फेवरेट चाइल्डहुड मकर संक्रांति स्टोरी मैं बसंत पंचमी हम बसंत पंचमी मनाते थे तो आई रिमेम्बर हमारी छत पे बहुत सारी पतंगे कट के आती थी एक सेकेंड एंड आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड सुबह सुबह कि जाके पतंग लूटूंगा लूटूंगा नहीं मतलब छत पे आके गिर जाती थी तो आई हैव neglected the fire for too long एक सेकंड ओ आग बुझ नहीं सकती आग नहीं बुझ सकती माइक this ash is crazy इसको यहाँ पे लगा दूं क्या अभी मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से आई नो कि धुआं बहुत आ रहा है I understand bipolar disorder very well, and I hope you are doing well. I can relate to it way better, and unfortunately, I know how difficult it is. I love you, and I hope I can talk to you and stay connected. I'm here. I am always here.
ठीक है, like sitting here sipping beer, making a bonfire जब तक winters है, eating my food, doing my thing, always here. And for anyone who wants to talk, have a conversation, as difficult as it gets, I'm more than happy to share stories that about maybe things that I have gone through, and to listen to you guys that maybe something what you guys have gone through. So I'm more than happy to listen to that. Um, Copy Ninja is here. Hola, hola, hola. रिदम कह रहा है केवी, कोई भी अगर केवी भाई आपको जज करेगा तो आई बैन हिम स्ट्रेट अप फ्रॉम स्ट्रीम, आई एम मॉडर्न नहीं नहीं, देखो, आई एम नॉट वरीड अबाउट बीइंग जज्ड एनीमोर. uh who's going to judge me for what? For being me? That is, I mean, if you are that person who judges another person for being himself, for being crazy, stupid, himself, like whatever he is or she is, then you think about that. I don't have to think about that person. I don't have to deal with that person. I am happy. That's all that I care about. Being happy is all that I want in life. The freedom that I have, the freedom that I live with is all I care about. Vex, I got dyslexia and autism. I know that, Vex. KV, when are you getting married? Not very soon, but soon. I think. I think. अर्पित कह रहा है कि के भाई आई एम इन बीटेक फर्स्ट ईयर एंड वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी लाइक नॉट राइट नाउ बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन करियर एनी सजेशंस. Hmm. I didn't do BTech. I did hotel management. That is what I was qualified for. Very hard work, back-breaking work. But if you want to earn big money, that's not the career. That's just a job. ठीक है, that's a job. You tell your parents, yeah, I got into college, government college. I got a good rank, IHM Bangalore, good college. Loved it. Loved the etiquettes that I learned there. Loved the humbleness that I learned there. But the job wasn't for me. If you want to make big money, whatever you're doing, BTech, VTech, get into finance. Just get into finance. If you don't know how to do finance, you if finance doesn't interest you, get yourself interested. You want to make money, get into finance. I mean, that is my suggestion. It's also a very hard work. Start working for a bank or something. Do an MBA or something like that after you do your BTech, CTech, whatever it is, and then just घुस जाओ finance में घुस जाओ. That's the way to make money. Working for a bank, that's how you make money. But yeah, no time. Money, yes. Time, no. I'm just existing, drinking, making crazy dark jokes, and supporting Arsenal. That should be my channel ka intro. Right now, my channel ka intro is some chat GPT nonsense. That should be my actual channel intro. Thank you so much, Ayush, for suggesting that. Uh, Shant keh raha hai, bro, why are you acting like a podcaster? What is that sitting pose? I actually need to pee very bad. So I'm trying to hold it in. This is that pose. Manas, I'm sorry, I won't bring down the mood. You're a strong person. I don't know how many have told you that. Keep going. I love you, Manas. Thank you so much. कि भी इतना कर रहे हो तो बारबेक्यू भी कर ही लो. अरे यार, मैंने बताया नहीं, मैं जोमेटो वाला मेरा खाना खाना लेके भाग गया. आई जस्ट टोल्ड स्ट्रीम के स्टार्टिंग में कि जोमेटो से मैंने फुल चिकन तंदूरी एंड फुल चिकन टिक्का मंगवाया था. जोमेटो वाला आया एंड खाना लेके भाग गया. रिडिकुलस. आई हैव ऑर्डर्ड अगेन, तो आ जाएगा खाना. सो एंड रिफंड भी आ गया है, तो वो भी ठीक है. पतंग लूटना, uh, लूटे तो बहुत है. बेस्ट फीलिंग. Used to be a very good time. uh, पर हाँ, like old times एकदम कह रहा कि भाई you're too humble about yourself, your I am who I am personality gave me confidence that I can embrace my personality among the crowd. So thanks Kai for being yourself. I appreciate it, Ism. Thank you so much. And thank you की क्या बात है यार. I तो suggest everybody कि be yourself. देखा जाएगा. Who's gonna judge you? God will judge you. He will say, अच्छा देखो, I'll tell you something. When an injured animal like a bird, like falls in your balcony. This is a true story. मेरी balcony में हुआ था. एक injured swift थी. Asian swift bird होती है. Now Asian swift cannot launch itself off the ground. It's not a normal bird. They build nests जो लटके हुए होते हैं या ऊपर होते हैं ताकि वो उनसे गिर के उड़ सकें. वो जमीन से उठ के उड़ नहीं सकते. So I got this Asian swift bird. उसका नाम मैंने Swifty रखा था. And I saw her in my balcony. उसको इंजरी हो गई थी. And I tried to help her out.
I don't know if it was a he or a she. I don't know. But I tried to help her out, and for a while I thought I could save her. But birds don't show pain that easily, like. And after a day, like I made a shoebox for her, so मैंने towel रखा. I tried to save her, and she died. I was very upset. But and then when it comes to like other animals, like animals who are hurt, like when it was presented in front of you, did you try to help? Did you get out of your car and try to help a person, another animal who was in need of your help? Then God will judge us. God will look at that, and if God doesn't judge us on that, I will ask him or her that like your judgment is askew. I why do you create pain if you don't want us to help, or if you don't want us to get involved? Why do you do so much? So there are a lot of questions that we can ask. I mean, it's a long story. I'll get very emotional. I don't want to मैं ट्रिप नहीं खराब करना चाहता किसी की. मैं किसी का वो नहीं करना चाहता कि मैं आई एम होलियर देन दाउ. मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं. आई हैव मेड सो मेनी मिस्टेक्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम. And what I've learned is that people are going to judge you no matter how good you try to be. ठीक है, like the best people with the best of intentions are usually shot. Martin Luther King, Gandhi, um, uh, other people like I don't know who else was shot. Kennedy was shot. I don't know if Kennedy had the best intentions or whatever, but I'm just जो मेरे नाम में मेरे दिमाग में जो नाम आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ. न्यू चैनल केवी उत्तराखंडिया. Not a bad suggestion. Audio 8 out of 10 केवी भाई set है at KV Reacts. Thank you so much. I agree, Rhythm. There are very few people who can keep their composure despite the problems. Setup looks lovely. I can't lie. Thank you, Arish. I appreciate it. अल्तमाश खान, थैंक यू सो मच. के भाई कैसे हो? ऑल गुड. ये बढ़िया सेटअप है, यही से करो वॉच अलोंग. नहीं हो पाएगा रात की 1:30 बजे, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. चार्ल्स कह रहा है फायरवुड इज कम्प्लीटली ड्राई देन स्मोक इज मिनिमल. हैवी स्मोक फायरवुड क्वालिटी का इशू लगता है. uh, Actually, Charles, this is the leftovers wood from yesterday's lorry. So I got what I got, and this is for free. So nothing beats free. Gaurav is here. I love the vibes around you, K bhai. Love from Nepal. Appreciate it, Gaurav. Thank you so much for joining in. I love when people say encouraging things and like try to egg you on. Nothing better than that. Uh, I'll. Hey, KV, it's me, Alexo. Remember Charles that chan? Yes, Alexo. How are you? By the way, guys, Alexo is from. I don't remember exactly where he's from, but I remember कि हम Durand Cup के I met him in a Durand Cup watch along, and he and his brother do watch. They used to come for the Durand Cup watch alongs. एक second. I was supposed to have a guest. Guest कहाँ गया? See, look at this. अब मैं कैसे जलाऊं इसको? कहाँ रखूं इसे? ये बहुत ज्यादा बड़ा है. That's what she said. ठीक है. Don't get क्या कह रहा है? I love the vibes around you. Hey, KV, it's me, Alexo. I do remember. Don't get married, bro. It's a shithole. Yikes.
मानस कह रहा है दिस थिंग, एक मिनट। लाला कह रहा है केवी भाई डू यू हेट मी? व्हाट gave you that impression that I hate you? I mean, how can you even ask me that question, bhai? This is so silly. That no, I don't hate you. I love you. In fact, I love you. I love Jayant. I love Suraj. I love Ishan. Uh, and everyone. I love everyone. I don't have time and space in my life, in my heart, to hate anybody, except those who try very hard to make me hate them. That I cannot help. आग अभी थोड़ा सा, guys, I apologize for the धुआं, पर आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट. अभी ये हो जाता है यार, मैं क्या करूं. Some would say that this is very ooh nice. लाला की झूठ से पहले एक और चैट था. This thing about humans, people don't help even the people who get hurt on the road, and pisses me off that they don't even call ambulance and they reach me at a stage where no help will work. I completely agree. K bhai, have you seen Blue Pale Dot from Voyager 1? वो वीडियो देख के डिप्रेशन चली जाती है. इट्स हाउ शोज हाउ स्मॉल वी आर कंपेयर टू दिस यूनिवर्स. Voyager 1, I think, is the furthest man-made object in the universe. I think it was launched in the 60s. It might be running out of fuel. It has a plutonium battery or something. But I think sooner or later it's going to run out of battery and stuff. But yeah, I love stories about space and stuff like that as well. I haven't seen Blue Pale Dot, but uh, Asad कह रहा है कि in summer you can do watch along from the rooftop and place a projector to enjoy the match. The rooftop. Are you sure? Because that is not going to work out very well with the sun glaring in my face. I would love to do an outdoors thing. क्या हो गया यार ये? What the hell? एक second, guys. एक second. Guys, I'll be very honest with you. इसको ना थोड़ी देर यहाँ लाना पड़ेगा. This is ridiculous. बहुत देख ली आग. एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम लोगों को आग लग भी रही है या तुम लोगों को गर्मी आ रही है इससे. सो आई थिंक Durant Cup in which Northeast United won? Yes, that is correct. K bye, why do you hate me? I don't hate you, Lala. Rhythm Kera, I'll tell you a story. I had one female best friend whom I met in kindergarten till 10th, and slowly
And steadily, I developed a feeling of love for her. And in 2016, December, she went to Mount Abu for what? Uh, Charles Duncan is here. Hi, it's me, Alexo. Hello, Charles. Hello, hello, hello. And this is your father's account, if I'm not mistaken, Alexo. Hello, Dalbhai. How are you? Happy belated Lori and Makar Sankranti. Rhythm keh raha hai for vacation and got involved in an accident. Oh my God, and died on the spot. I came to know later and was shattered. Since then, I never had a female friend. And on every December, I mourn. I never got the chance to tell my feelings to her and still regret it. Mm. Do you guys know why I started a YouTube channel? Oh my God, I can't believe I'm sharing this story. And not to compare, I'm just sharing my own story with you about loss and grievance. Fuck, I need a beer before I do that. I'll be right back. I'll share the story. I'll share the story. Give me a second. ये भी भैया वेटिंग रूम में हूँ. ठीक है, ठीक है. I'll invite you. ओहो, पर यार. Rhythm, why don't we do something? I'll send you my WhatsApp number. ठीक है. I don't know if you're on my Discord. If you can join my Discord, join my Discord. तो Discord पे DM कर दूंगा, Insta पे DM कर दूंगा, whatever. I'll share you a very personal story. I've shared this with Ayush Lala. Shared it with Piyush. Everybody who knows me knows this story. Vex knows it. Orbit knows it. All my mods know it. I'll share this story with you. And if anybody else also wants to know this, but it's nice to share out in the open. But since you shared such a deep thing about loss, I also wanted to share, not to compare, but to let you know that I understand what loss feels like, and to tell you that it is never easy. It changes you. You're the person who you used to be, and you never will be because it can't be changed. It is. It has happened. It's never going to unhappen. So, आ गया? Let us invite our guest. I think we have a guest here today. Hey, can you hear me? Rajat, how are you? Good morning. थैंक यू और आप कैसे हैं? Uh, मैं हमेशा बढ़िया रहता हूँ. So, guys, just to give you an introduction, Rajat is a new creator. एक सेकंड ना, इतने बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है. इट्स ओके टेक योर टाइम
He's a new creator. He's a Spurs fan. So quite an awkward choice to have him as the first guest on a Bonfire Chill stream. But I was speaking with him. He seems like a very nice person, and we had a conversation on Instagram, and he was telling me about. He was talking to me about content creation, this and I just want Rajat, I just want to let you know that I am not an expert on content creation. I am an expert on just being myself. So that is what I bring out. Uh, can people see you? Are you visible? Yeah, Wait a second, I think. Ah, yeah, there you are. Perfect, perfect. Sorry, मेरा थोड़ा सा नेट पीछे भाग रहा था. हाँ, so Rajat, where are you these days, and what are you doing? Would you like to introduce yourself to the chat? definitely. Uh, so, guys, मैं currently अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ and साइबर सिक्योरिटी में परस्यू कर रहा हूँ and the reason I chose to be a Spurs fan is like मैंने फुटबॉल प्रॉपर्ली वॉच करना थोड़ा लेटली किया था अराउंड 2023 एंड उस टाइम में पोस्टकोग्लू के अंडर वी वर प्लेइंग एंड मुझे वो टाइप का फुटबॉल बहुत ही मतलब सही लगा था दैट अटैकिंग इंटेंट इवन दो उसके फुटबॉल में हमारे को बहुत इंजरीज भी हुई थी बट स्टिल दैट वाज द फुटबॉल आई लाइक एंड अगर मैं फुटबॉल तब इतना पहले प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता था तो दैट टाइम आई वाज Hmm. लाइक अ मैड्रिड फैन लाइक जब एल क्लासिकोस होते थे आई यूज्ड टू वॉच दैट तो So, सिंस यू what आस्क्ड got you कि into football? Like या Spurs तो चलो ठीक है, पर like how like India में like we all know like select sports होते हैं, mostly it's all cricket. So, what got you interested in football? Is what I हाँ would like to ask. so like basically like I have been born and brought up in the Middle East and फिर मेरे जो वहाँ पे friends थे like they were from South India and people from Kerala from Tamil Nadu and Kolkata like these people they are interested in football more तो हमारी groups में बात होती रहती थी तो like even when I play football, I play as a role of a defender. Like मेरे को वो करना नहीं आता है. And तो मेरे को football के basic rules and सब तो पता थे. But like मैं कभी properly follow नहीं किया. And if you ask me about the teams, like मेरे एक दो तीन टीम्स इससे पहले थी, but मैंने कभी उनको follow नहीं किया. And I never got that intent like Madrid को तो I चलो support for Cristiano. And बाकी टीम्स का मेरे को इतना कुछ प्लेयर्स नहीं पता थे मैनेजर्स नहीं पता थे बट व्हेन आई डिसाइडेड कि चलो नाउ इट्स हाई टाइम आई शुड लर्न प्रॉपर्ली I started Hmm. watching. मेरे को remember है like around 10th of December 2023 there were two matches. एक Chelsea Everton का था and Spurs and Newcastle United के मैच था. तो Chelsea lost to Everton that day like from 0-2 and Spurs defeated Newcastle United 4-0 that day. तो Chelsea में मेरे को पाल्मर पसंद आया था and यहाँ पे तब उस टाइम पे ह्यूमिंग सॉन्ग थे तो he was like I like this intent of playing. That's one of the reasons I chose Spurs. Insane. Well, I'll be very honest with you. I think it's a very questionable decision, personally. It's okay. But I think Spurs have had their players in history. Gary Lineker used to play for Spurs. Luka Modric once upon a time used to play for. In fact, Luka Modric, I remember the Modric of Spurs because he used to play against us. Gareth Bale used to play for Spurs. खेलता था उनके लिए and many good players have come to Spurs and gone out of Spurs and I feel कि like I'll be very honest with you like आज के time पे like people look for a rivalry like Mhm. I don't really see it in the sense कि जैसे हम we are Indians right like for us Yeah. Arsenal and Spurs is teams we support but those who live in North London it is a different story for them so I would really compare us to them. Mhm. So if I see a Spurs supporter like in a screening पे जैसे साथ में मैच देखने जाते हैं साथ में joint screening होती है something like that. So I won't really hold it against them. Like you love what you love, you like what you like. Harry Kane has been a great player for you guys. Heung-min Song has been a great player for you guys. And I think Yeah. अगर I was so glad the time जब आप लोग वो UCL final हार गए थे because that would have devastated me. But I think Spurs in their own right have done quite decent.
Like, Hmm. where do you see Spurs like आज से like वैसे तो हम like football के बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं. This is going to be my last football question because this is a Okay. chill stream, so I don't want to keep that football. Obviously, as an introduction, it is important. But where do you see Spurs in the next 5 years? This is like an interview question. Okay. So depends कि आप क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, आप किस मैनेजर के अंडर खेल रहे हो, एंड हाउ विलिंग आर यू टू Right. गिव द टाइम. अभी currently under Frank, when he came to everybody was like ठीक है, like the way he converted in Brentford and his tactics. Mm, But like I have been Frank in for a lot time, but जो last के 2-3 मैचेस हुए हैं, that makes me question his ways of playing, and वो थोड़ा मुझे लगता है. But then again, I have this question कि अगर आप हर 2 साल में अपने मैनेजर सैक करते रहोगे, चेंज करते रहोगे, व्हाट्स द पॉइंट? क्योंकि ऐसा तो कोई मैजिक पॉइंट तो है नहीं कि कोई भी आ जाएगा एंड एकदम से टीम अलग ही लेवल पे खेलने लग जाएगी. एंड इट इज सैड आजकल सुनने को मिलता है कि वे नॉट इवन कंसीडर एज लाइक द टॉप 6 क्लब्स, एंड वी आर गोइंग ऑन अ पाथ टू बिकम अ फलहैम और सम अदर टीम लाइक इट मिड टेबल टीम. बट इट्स लाइक देखो, फ्रैंक को भी आए हुए हार्डली 8-7 मंथ्स हुए हैं, एंड आई एम लाइक इसको एक और ये एटलीस्ट ये विंडो दे के देखते हैं, एंड इफ इट्स नॉट गोइंग राइट देन तो द मैनेजमेंट हैज टू सैक हिम. बिकॉज अगर आप पोस्टेकोग्लू को ट्रॉफी जीतने के बाद सैक कर सकते हो, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर देम बैकिंग फ्रैंक आफ्टर अ mm, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. But then again, you are stuck in a vicious cycle. Like you bought in Frank to change some things, and it is not working so far. And the way we have lost our previous 2-3 matches, वो थोड़ा questionable है, and उसकी थोड़ी approach is pragmatic है. But then जब आप sign कर रहे थे, तो you should have been getting an idea, right? आपके दिमाग में कहीं तो hindsight पे तो पता ही होगा कि the way of football he plays. right. Mm. बट अभी मैं चैट से सुन रहा था ऐसे कुछ सिचुएशन हो गए हैं जहाँ पे मैनेजर अभी जैसे वो जाबी अलोंसो वाली सिचुएशन थी. इट सीम्स लाइक एम्बापे हैड समथिंग टू डू विद इट, यू नो, लाइक गेटिंग प्लेयर्स आउट. तो हैज like is the game dead? Like has the game gone? Because the game that I used to remember was manager tells the boys what to do, boys follow it, boys win or lose, and manager according to the result decides how to um, you know like गो फॉरवर्ड विद द टीम. आजकल तो ये हो रहा है कि यार एम्बापे को इतना शेयर है इस क्लब में, एम्बापे की ये औकात है, यमाल को कोई छू नहीं सकता. ये वो होने लग गया है. आई मीन आई एम नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग दैट. आजकल जैसे रूमन एमरम भी है, ही केम, he worked for some time, now he's taken a 10 million pound paycheck and he's effed off. So are is Thomas Frank also trying to get himself sacked ताकि उसको भी एक अच्छा paycheck मिल जाए? He's like I didn't really care. So is the old guard dead? Like are is, where is football heading? किस दिशा में जा रहा है फुटबॉल? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको फ्रैंक के पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ. हाँ, लाइक अंडर फ्रैंक आई कैन से अगर इस लेवल के प्लेयर्स होते हैं, एम्बापे होते हैं, आई डोंट थिंक फ्रैंक वुड हैव बीन एबल टू कंट्रोल. क्योंकि अगर आप अभी के टाइम पे देख लो, यू सी बीट वैंडी वैन गोइंग और पोरो फाइट्स हो रहे हैं, तो अगर ये टाइम पोस्टेकोग्लू होता तो आई डोंट थिंक ये सिचुएशन होती एटलीस्ट. समवेयर डीप डाउन द लाइन प्लेयर्स कुछ तो हैं जो नहीं इतना उसको समझते. अब वैंडी वैन का अगर आप स्टैचर देखोगे हमारे क्लब में, तो आई थिंक उसके अपने रीजंस ऐसे हैं. बट देन अगेन टीम के लिए तो सही नहीं है. टॉकिंग अबाउट लाइक एंजो मैरिस्का, एमरिन हो गया, आई थिंक मोर ओवर द साइड. चलो एमरिन के टाइम में तो प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट देन अगेन आप मतलब जो टीम का स्ट्रक्चर है, अगर मैनेजर मतलब जो ओनर है टीम के मैनेजमेंट ही कंट्रोल करना चाहती है और मैनेजर को मैनेज नहीं करने देगी एंड उसको बोलेगी बस आप कोच कर दो प्लेयर्स को, तो हाउ इज इट गोना वर्क? Yeah, एंड yeah, फॉर that's क्लब्स true. लाइक रियल मैड्रिड हो गया, प्रॉब्लम इसकी ये इनका स्टैचर बहुत ही अलग लेवल पे है एंड दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स. बट सैड पार्ट इज कि आपके पास अगर क्वालिटी भी है, इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, क्योंकि आपका जो नया अभी कोच आए हैं उनके, ही इज आल्सो सेड आई एम हियर टिल द टाइम मैड्रिड वांट्स मी. सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन द प्लेयर्स. अगर क्योंकि अलोंसो ने उनका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहा था, तो पहले 11 गेम्स में तो जब वो जीत रहे थे, नोबडी लाइक दैट टाइम इट वाजंट दैट मच ऑफ इशू. बट फिर अगले 9 Hmm. गेम्स में जब वो सिर्फ 3 गेम्स जीते, तो फिर वही बात आ गई कि दिस इज नॉट द वे वी प्ले. आप अगर यही सिचुएशन कंपेयर करना चाहोगे तो आप लिवरपूल का एग्जांपल ले लीजिए कि यर्गन क्लॉप के Hmm. जाने के बाद आर्ने स्लॉट डेफिनेटली वन अ प्रीमियर लीग, बट ही डिडंट चेंज एनीथिंग Hmm. दैट सीजन, एंड नाउ ही इज ब्रिंगिंग हिज ओन टैक्टिक्स.
So people like fans are saying कि यार ये नहीं था हमारे स्ट्रक्चर, ये इसने खराब कर दिए. And many people are Mm-hmm. slot out and they have their own reasons. And I think अभी क्योंकि अलोंसो अवेलेबल है तो might be it's a high possibility ये sacking में चल रहा, already 3 managers जा चुके हैं, maybe fourth number is of slot. That's a presumption. यार क्या हो क्या गया है यार दुनिया को, मतलब आज के टाइम में क्या किसी की जॉब सिक्योरिटी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? लाइक मतलब जैसे अपन लोग हैं, ठीक है ना, अपन वी गेट लाइक मिड जॉब्स, कल को अपन को कोई सैक कर दे, ठीक है, हमारी तो गांड फट जाएगी विदाउट अ प्रॉपर पैराशूट पैकेज, है ना? लाइक व्हाट विल वी, लोगों को तो मिल, इज दिस द नॉर्मल कल्चर कि आपको नहीं, ठीक है, आपने सैक कर दिया बंदे को, एंड क्या गारंटी है कि अगला मैनेजर ट्रॉफी लेके आ जाएगा? थॉमस फ्रैंक को हम सैक, कौन आएगा? व्हाट इज द प्लान? लाइक थॉमस फ्रैंक को ठीक है सैक कर देते हैं, अगला मैनेजर कौन है? And क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है उससे? एंड मान लेते हैं कि आप एक अच्छा सा मैनेजर लेते हो, जैसे एवर्टन एक बार कार्लो एंसेलोटी को लेकर आई थी, ठीक है, एंड एंसेलोटी के चहते प्लेयर्स भी आए थे, आपका वो हामेस रोड्रिगेज आया था एवर्टन में खेलने के लिए, एंड एवर्टन डिड रीजनेबली ओके, बट व्हाट इज द गारंटी? लाइक व्हाई डोंट यू ट्रस्ट, व्हाई डोंट पीपल, और क्या दुनिया में पेशेंस इतना कम हो गया है कि या फैंस में पेशेंस इतना कम हो गया है कि भाई जैसे ही आपको रिजल्ट थोड़े से खराब होते हुए लगे आप क्रिटिसाइज करो, बट देखो, एक होता है कि जीतना नहीं, और एक होता है रेलेगेशन, स्पर्स, और ये जो अपन टॉप सिक्स क्लब्स कहते हैं अपने आप को, अपन रेलेगेशन से नहीं झगड़ते. आप इफ यू वर अ हल सिटी फैन, इफ यू वर अ बर्नली फैन, इफ यू वर वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स फैन, like what would your thought be? Like should we keep the manager, should we sack the manager? Like what is the plan for the club, the long term plan for the club? अगर आप हल सिटी या ये जो दूसरे क्लब्स देख रहे हो, आई थिंक वहां पे तो उनकी मैनेजमेंट उनको टाइम देती है अपने प्लेयर्स को, and बोलती है कि आप ही जो हो, मतलब खेलो, अगर आप करते हो तो सही है, नहीं करते हो तो देन वी सी. तो फिर दैट दिस इज इज द द बिग रीजन. सिक्स प्रॉब्लम. नो, प्रॉब्लम इज कि मैनेजमेंट की ईगो एक तरफ आ जाती है. आई डोंट थिंक चेल्सी का जो सैकिंग हुई थी मैरिस का, कि आई डोंट सी एनी रीजन. मतलब आपने उसी टाइप का ही अभी जो नया अपने अपने सिस्टर क्लब से सासबक्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वही टाइप के एक मैनेजर को लेकर आए हो, तो आपने बस चेल्सी को मेरेस्का को क्यों सैक किया? आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन प्रॉपर्ली. लाइक कमिंग ऑन टू, I've seen. Sorry, continue. एंड कमिंग ऑन टू एमरिन, बात वही है कि आप उस टीम में आप कौन सा स्ट्रक्चर प्ले करना चाहते हो. ठीक है, आपने एमरिन को डाल दिया. एमरिन स्पोर्टिया के लिए तो इतना सही कर रहा था, तभी आप उसको लेके आए थे ना स्पोर्टिया क्लब के लिए. तो थिंग इज कि मैनेजर एकदम से तो चेंज नहीं करेगा. चलो एमरिन के पास तो तब भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रह चुका है, बट ऐसा इट्स नॉट गोना हैपन कि जो अभी नया उनका हेड मैनेजर आया है माइकल क्लार्क, आई डोंट थिंक ही इज गोना चेंज एवरीथिंग ऑल ऑफ अ सडन. डिपेंड्स कि अगर उसकी स्ट्रैटेजी चल जाती है एंड इट्स मोर अपीलिंग टू द सिस्टम व्हाट दे हैव, डिपेंड्स. बट ओवरऑल टू योर क्वेश्चन, अगर आप कहोगे, द थिंग इज कि यार देखो, if I compare this to cricket, let's give an example of cricket. Can I just give an example of IPL? Like, is it okay? इज इट We ओके? can. मतलब प्लीज यार, क्या मैं यहाँ पे Okay. बैठ के बियर पी रहा हूँ, यू आर आस्किंग कि मैं क्या आईपीएल को कोट करता हूँ? से हम नॉर्थ कोरिया में नहीं रहते हैं यार, से व्हाटएवर यू वांट. Okay. हाँ, तो अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखते हो, मुंबई इंडियंस को देखते हो, तो आप देखो कि उनका एक कोर बेस जैसे बना होता है, राइट? या उनकी टीम अपने प्लेयर्स के एक लेजेंड्स भी होल्ड करते हैं. नाउ इट्स क्वेश्चनेबल कि अभी क्या रिसेंट टाइम्स में हो रहा है, कैसे जाने दिया, लेट्स लीव दैट अपार्ट फॉर सम टाइम. बट वो ठीक अपने है. प्लेयर्स को होल्ड करते हैं, वो एक लेगेसी वहां से बनाते हैं. अगर आप अभी करंट एग्जांपल देखोगे, देयर वाज वेरी लाइक ह्यूमर्स गोइंग अराउंड कि मो सलाह माइट लीव लिवरपूल. एक टाइम पे ऐसा हो गया था एंड दे जस्ट डिडंट इवन प्ले हिम व्हेन ही केम आउट एंड ही सेड कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे. तो मैनेजमेंट जस्ट वेंट अगेंस्ट हिम, लाइक उसे ड्रॉप किया था एक टाइम पे. सो पीपल वर लाइक ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप अपने लेजेंड को ऐसे तो ट्रीट नहीं करोगे. बट दैट्स द होल पॉइंट कि वेरी ट्रू. when you have your own players, like if you look upon Spurs, when we talk about legends, Heung-min Son is our legend. अभी recently जब Slavia Prague के against UCL में match हुआ था, he came there. So we paid him a tribute, like a proper tribute at that time. But so these are some things, अगर आप as a club अगर आप यही नहीं maintain कर रहे,
आप अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे और आप अगर बार बार अपने प्लेयर्स चेंज करते रहोगे सो व्हाई वुड एनी अदर प्लेयर ट्राई टू इन्वेस्ट देमसेल्व्स इमोशनली मोर। वो तो कहेंगे हाँ यार इधर आ जाओ खेल लो, पता नहीं कल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कर भी लिया तो हमको बाद में इतनी वो देंगे नहीं। सो इट्स हाउ True. यू डेवलप अ ट्रस्ट। ओके लाइक फॉर आर्सेनल वी से ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप मेरे को कहो कि लेट्स गिव अ assumption कि आर्सेनल नहीं जीतती है, दैट्स वेरी अनलाइकली टू हैपन। मोस्टली आर्सेनल इज गोइंग टू विन द लीग, एवरीबॉडी इज नोइंग दैट। तो नाउ इफ यू से कि सैक आर्टेटा, यार मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस मैनेजर ने आपको इतने टाइम से सेकंड पोजीशन तो दिला रहा है ना, मतलब ठीक है आप कहते हो यू वांट टू गो टू अ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द गारंटी यू आर गोना गो टू द नेक्स्ट स्टेप और यू आर गोना गो बैकवर्ड्स। यू कैन ट्राई। हेलो। हेलो। हाँ नो प्रॉब्लम। सो द वे आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ लाइक आर्टेटा एंड मैं अपना पीओवी दे रहा हूँ कि अगर आप मान लो नहीं भी जीतते हो, आई डोंट थिंक अगर इसे अभी एकदम से शुरू हो जाएगा सैक आर्टेटा, बट माय क्वेश्चन इज कि अगर आप कर भी लोगे व्हाट इज द गारंटी यू गोना गो टू द नेक्स्ट स्टेप। या तो बहुत ही डेफिनेटिव फ्लॉस निकाल दो उसकी गेम प्ले में कि यार ये तो बहुत ही बेसिक चीज थी नहीं कर पा रहा। आई डोंट थिंक दैट्स द केस, जितना मेरे को समझ में आता है। तो ओके भाई आप बताएं। कैन यू हियर मी? सॉरी यार, थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन था आई थिंक मेरे एंड से। हाँ ओके। हाँ आई सो डिडंट हियर यू। द yeah, so I was just giving an example of Arteta and saying कि let's assume it's a presumption that you don't win. So there's gonna I am definitely sure जो वहाँ पे लीग शुरू हो जाएगी कि sack Arteta. At least the opponent they are gonna run this agenda. I don't know how much it's gonna be in your club, but then again I'm saying कि it doesn't make any sense to me. हाँ नहीं, doesn't make any sense to, I can hear you. Yeah, so I'm saying it doesn't make any sense to me because at least under this manager, you're achieving those heights. आप अभी यूसीएल में लीड कर रहे हैं. And if you can defeat Bayern Munich, such a team in UCL, so I'm saying you're a very good process. And इस साल तो लग रहा है कि आप लोग जीत रहे हो. Like as a Spurs fan, but then Chelsea is inconsistent ना. तो नहीं लग रहे मेरे को. हाँ. So saying for Chelsea, अगर आप बोल रहे हो Chelsea एक टाइम पे लग रहा था कि टाइटल रेस में है, बट नहीं हुआ ना. एक टाइम के बाद इट जस्ट बिकेम कि वो नहीं उस फॉर्म को कंटिन्यू कर पाया एंड एटलीस्ट कहा जाता है कि नवंबर महीने में तो वैसे भी उनका एक पॉइंट ऑफ टाइम डिप आ जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? क्योंकि चेल्सी के फैंस हैं चैट में, दे माइट डिसएग्री और अग्री विद यू, वी डोंट नो। व्हाई डू यू थिंक चेल्सी इज नॉट इन द लीग रेस राइट नाउ? उनके कुछ ना इनकंसिस्टेंसी आई थे ना। एटलीस्ट बार्सिलोना अगेंस्ट द बार्सिलोना जो मैच कह रहे हो उसमें कुकुरेला का बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट रोल था। एटलीस्ट यमाल को तो उसने कंट्रोल किया था उस गेम में। सो बट देन उसके बाद अगर आप देखो वो लीड्स यूनाइटेड से भी आई गेस डिपेंड करे, नॉट फॉलोइंग दैट मच, तो मेरे हिसाब से मुझको जितना याद है जीते नहीं थे, ड्रॉ हुआ था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो दैट्स माय टेक लाइक। अच्छा रजत, what are your expectations from Spurs for the remainder of the season? और नाउ हाउ द सिचुएशन इज, एटलीस्ट ब्रिंग मी नियर टॉप सिक्स, लाइक एटलीस्ट सेवेंथ या एट पोजीशन तो आप Top पहले आओ क्योंकि six. the Okay. way you're playing, you're not even gonna make it in six. Like I can definitely tell you, जिस तरीके से आप अभी खेल रहे हो, आई डोंट थिंक आपके अंदर यार मैंने सी स्पोर्ट्स मैचेस एक पॉइंट ऑफ टाइम तक एक इंटेंसिटी आती है, बट आई एम लाइक तुम लोग सो रहे थे क्या उससे पहले? जब एक गोल पड़ जाता है
you are totally dead. तुम्हारी fight खत्म हो जाती है, and then somehow you score and then you start attacking. ठीक है, so that is, अगर मैं स्पर्स की अच्छी परफॉर्मेंस वी लॉस्ट टू लिवरपूल अगेंस्ट दैट, लाइक वी वर 9 men डाउन, बट वहां पे मुझे लास्ट के 10-15 मिनट्स में वो इंटेंसिटी दिखी थी. Hmm. So I'm like, even up अगर last match FA Cup का ले लो, we just got knocked out in the third round itself, and people are saying we played good in the second half. But उसे, and you know, in that match Moani he created many chances for us. अगर आप वो 3 गोल पड़े थे हमारी तरफ से, 2 were considered offside and 1 was given. Hmm. So I'm like, ठीक है, तो आप वही इंटेंसिटी बीच बीच में लेके आ रहे हो, ऐसा हो रहा है आपके एक तरफ से एकदम से चार्ज दे देते हो एंड देन यू गो टोटली लो एंड देन यू स्टार्ट अगेन. दैट्स नॉट हाउ यू गोना विन द मैचेस. एंड द सब्स्टिट्यूशंस ही इज डूइंग, जैसे उन्होंने सोलंकी को लास्ट 80th मिनट पे खिलाया था, ही सेंट डीन स्कारलेट बिफोर दैट. सो आई एम सेइंग कि आपके सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं थे. अगर आप सोलंकी को खिलाना ही चाहते थे, यू कुड हैव बॉट हिम अ बिट अर्लियर, ही वुड हैव मेड एन इम्पैक्ट. So थिंग बिंग कि Fair जैसे enough. स्पर्स अभी खेल रही है, आई डोंट think much. We have got Gallagher right now, and he's a good box to box midfield. But then again, हमें passive progress की जरूरत होती है, and I'm not sure कि वो कैसे होगा. Like our own fan base is divided. Half people are saying हाँ ये सही है, and you know Fabrizio said that we have been wanting Gallagher from a long time. Like he was linked to us in many transfer windows. We were not able to get him back then. So Hmm. now I'm not even sure कि ये Frank लेकर आया है या management चाहती थी, because if you look earlier also Spurs have been linked to Gallagher. So I think you and Utkarsh would have a very good debate about where Spurs is heading. And I will tell you one thing. I don't think that you are one of those people who are the divided section. I think Utkarsh is very balanced in his opinions. मतलब कभी mm, कभार मेरे पे चिल्ला देता है पर what can you do? But you guys are pretty balanced in your opinions. I think you put your points across pretty well. एंड आई थिंक कि तुम दोनों को साथ में बिठा के ना एक स्ट्रीम करनी चाहिए लाइक विच डायरेक्शन स्पर्स इज हेडिंग तो वी विल डेफिनेटली प्लान दैट एंड व्हेनेवर यू आर फ्री वी कैन डू दैट अच्छा रजत आई जस्ट वांट टू से अभी के लिए इतना करते हैं ठीक है okay, आई कंटिन्यू एंड आई माइट हैव somebody else also coming तो I need to all right. थोड़ा सा मेरे को वो करना पड़ेगा बट if you want to plug something plug your channel plug it right now and chat में अपने चैनल का नाम डाल दो so that people can subscribe people need to know that there are Spurs creators out there because Utkarsh also like he is getting recognized and I hope that you also get recognized and against my wish and will everybody who is creating good football content with honest intent and being themselves deserves a platform so go ahead plug whatever you want Um, okay, I'm just new to this interface मैं use कर रहा हूँ, so can you just, I'll send the channel name in the Instagram plug and you can just put. tell people what you who you are what your Okay, channel is what you do okay, okay. So guys, I am just creating, for now I'm creating my content on Instagram. I'm just started with Instagram, and slowly जब मैं थोड़ा grow करूँगा, तो I will shift on to YouTube. So if you just want to like watch some pre-match views, post-match reviews, and some of the other news, I can definitely try from my end. अगर आपको मेरा content पसंद आता है, so please try following me. I do make content in English and Hindi. And बाकी सबका अपनी choices होती है. If you like the way I speak, if you like my point of views, if you agree with me, and if you disagree, it's all right. Please let me know. So मेरे channel का नाम है Spurs with RD. Just use everything in lowercase, and you will find that. एक बार चैट में और लिख देना and guys it is I don't know 1 year ago I was a new content creator and I would have really loved if people had shown some support because when you hit that content creating space when you're in that mood right that is when you make the best content these early videos जब भी हम early videos बनाते हैं trying to get reach trying to get looks like कोई देखे हमको that is when we're naturally trying to be ourselves so do show some support for new content creators people who are honest in the heart and trying to do their best and
genuinely love their team and love the sport. So please go ahead, and I hope you've put in your Instagram thing in the I'm chat. actually trying to figure out that मेरे को ये इंटरफेस अभी समझ नहीं आ रहा, तो I will just do that once I leave. I will just post it out with you, ठीक है. or if you could do. Okay. I can't do it right now. मैं खुद this is a different ये मैं टैब सिर्फ चैट के लिए है, मेरा फोन वहाँ पे रखा हुआ है तो Okay, I'll do so it as well. I'll do it as well. I'll just do a comment from my YouTube ID, and then please just pin that if you could. Like. आ गया. अच्छा रजत you can leave the stream and you can send a chat. मैं उसको पिन कर दूंगा. ठीक है. That I can do. Yeah. Thank you so much for joining in. Really appreciate it. And we'll definitely speak again when I'm not doing this. All right. All right. It was wonderful to speak with you, brother. Thank you so much for joining. All right, guys. That was Rajat, Spurs fan. Do show him your support. I mean it. And let's get on with our chill stream now. US चले गए, but that's okay. Internet being Spursy. Charles says, finally, we have had hard luck with the injuries. That's about it, says Andy. Abhishek keh raha hai, internet is way better than Spurs. Chelsea for the Barca curse. Andy says, inconsistency की definition क्या? Club World Cup champions है. No, Europe for Spurs sounds right. कि भाई एक portable fan ही तो रख लो. जब ये है मेरे पास, तो why I need to buy anything? You know what I need? Right now I need a lot more wood. ये पजामा मस्त लग रहा है. नीचे से फटा है वैसे. I don't think if you know. Guys, I'm taking chats. Please वापस आ जाओ. Come back, come back. Rhythm, where are you? Manas, Sushant, लोग सब वापस आ जाओ. We're continuing our chill stream. ये बड़े वाले लॉग में आग क्यों नहीं लगी अब तक? Fire, give me fire, fire, please, burn. हाँ जी, चैट्स ले रहा हूँ मैं, चैट्स ले रहा हूँ मैं पता है क्या, मेरे को 90s के वो नहीं, तो वो लोग होते थे पॉपकॉर्न बनाने वाले, ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसे पंखा मारते हुए. आ जाओ, चैट ले रहा हूँ, चैट ले रहा हूँ, आ जाओ, आ जाओ. सूरज कह रहा है, are you doing a watch along today? Yes, I am. 12:30 a.m. There is going to be a watch along. I am going to be doing a watch along. Spurs should not be considered in top six category anymore. इधर ही हूँ, आपका podcast सुन रहा. Okay, okay, Manas. Okay. नहीं नहीं, we were doing some serious talks also. थोड़ी देर पहले तो I also had something to share. I don't mind sharing it because I have shared it on stream before. I've shared a lot of personal stories on stream before, and I'm not afraid or not ashamed of sharing them. So आपके यहाँ मकर संक्रांति पर कोई स्पेसिफिक डिश बनती है, जैसे मूंग दाल के पकौड़े, बाजरा की मीठी टिक्की? एक सेकंड, I'll ask the expert. मम्मा, मकर संक्रांति के दिन
हमारे यहाँ कोई स्पेशल डिश बनती है क्या, जैसे मूंग दाल के पकौड़े? येलो राइस। येलो राइस बनती है। येलो राइस बनती है गाइस। आई नो दैट के भाई, इट्स एन इररिप्लेसेबल लॉस। किसकी बात कर रहे हो? वी कॉल इट तेहरी, द येलो राइस विद वेजिटेबल्स। चार्ज कह रहा है आई एट येलो राइस टू। नाइस। अरे, FBX is here. What's up, FBX? How's it going? How do you know about that? तुमको किसने बता दिया? I was supposed to share it. It was right here in this balcony that the idea of KV Reacts was birthed. On this bench, in fact. On this very bench, the very idea of KV Reacts was first flirted with. You were on Lala's channel. Then you would know. It it's that regret, that he'll never watch it ever. That's what hurts. Guys, अपने chats लाओ यार. Let's continue with our conversation. I know कि थोड़ा सा वो हो गया है. I mean, we were talking a little bit about football, but that is to be expected on a football channel. All right, COKV. What kind of that is this? I know no amount of consolation will be enough, but I can assure you he would have been happy. Take care. He had his own reservations about me starting a football channel. He wanted me to do something like Bhuvan Bam or something. Like, I can't do that. I don't know anything about that. I need a place to start. I need something to do. Like, I need a foot through the door, like turning on the. I hope you guys go and see the first ever stream I ever did. Arsenal versus Wolves last season, I think. First stream ever. I had no idea what to do. I was not talking to anybody. I was just. I think I was just acting. I was just doing acting. So weird. Arish कह रहा है कि predictions for tonight. Arish, you know I don't do predictions. You can get me drunk off of what was that Goa beer you were telling me about a little while ago. You can get me drunk off of that beer. I'm not giving you any predictions. I don't do predictions. You should know this by now. Uh, Alexo, good night. Thank you so much for joining. Appreciate it. And do join in from time to time. We love to have you here. You know, and give my regards to your father. Give my regards to your brother as well. And take care. See you soon.
I know it's late for you. It's 9:30 bedtime. Um, Abhinav says, "क्या हाल चाल के भाई?" I am good, Abhinav bhai. How are you? How is it going? कैसे क्या हाल चाल है आपके? Peoples, yes, you can get me drunk on people. You can't get a prediction on me. Are you very honest? What's a spirit K Y? My spirit is whiskey. Whiskey is my spirit. Or do you mean my spirit animal? No, my spirit is whiskey. And he says, what is your favorite AFTV cast member? Die. Because he can just, I mean, I understand. See, I don't want to be him, but I can laugh. And you know what? Laugh at his, that the whole super chat thing. That I can laugh at. But when he tries to overdo it, I'm like, nah, not that much. Take take it easy, you know. Otherwise, I'm like, I don't know. That is fun. I like fun. Fun is good. But you too, brother. You too, Alexa. I mean, what's up? How's it going? तुम लोग आज वॉच ऑन कर रहे हो? Yes, 12:30 बजे. I think Mike. Hello, hello. Mike on. Can you hear me? Hello, 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 hello. Can you hear me now? Can you hear me now? Okay, wait. I have an idea. Do this. Can you hear me now? Can you hear me now? How about now? It's clear. It's clear. Perfect. Thank you so much for helping me out with that. Really need this audio assistance and somebody to figure things out. Go ahead. What were you guys asking? About to get another beer. Where do you see yourself in this journey of social media creation? Okay, I'll tell you some of my idols in social media creation.
Do you know? I want to be kind of a mix between Laser Beam and Penguin Zero. Charlie White, Charles Charlie White. Those are the two guys. Like when I want a yin, I want Charlie White. When I want a yang, I want Laser Beam. So I'll be crazy like Laser Beam, but I want to be grounded like Charlie White. That's who I want to be, or I aspire to be in this space. I see myself in those guys. So what happens, I don't know. Is our audience? Uh, I mean, I don't know what the audience is gonna think. I don't know. I'm just gonna I'm gonna be me, but those are the guys that like I like to be crazy. I like to be honest. Both those guys are honest. Both those guys are a little bit crazy. Laser Beam is a little bit more crazy. Charlie is a little bit more grounded. Besides that, I see if I have the tools, if I have the right tools, I want to make great funny videos for everybody. That's what I want to. Right now, my editing skills, my the way that I'm making the videos, I don't know how to edit. एंड आई कीप ट्राइंग टू एंड व्हेन मैं कोर्स पे जाता हूँ ना जब मैं सीखने जाता हूँ आई एम लाइक यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार दिस गाय इज नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन ऑल आई वांट इज लाइक 3 questions आंसर्ड or 4 questions answered. Then I go to Chat GPT. I ask him, Chat GPT is also confusing me. Oh, go here, go there, or do this, do that. I'm like, okay, okay. Like, no, no, no. This is not what I'm trying to say. This is what I'm trying to say. This is what I want. But yeah, I have gotten a couple of questions ka jawab, but it is gonna take some time. That is what I've realized. I thought ki camera on karo, do whatever you want, like I'm doing right now. But this is after a year of doing YouTube, right? So like I have like 5 people watching me or 10 people watching me or something, whatever. Probably more at times, but like when I'm doing this, who cares? But yeah, main thing is that make good videos that I would. And the thing about making videos is I wouldn't publish a video जो मैं खुद ना देखूं. I wouldn't अगर if I don't watch it, nobody deserves to watch it. I only want to make videos कि बाकी लोगों को भी देखने में मजा आए. Like Salah gets an ankle injury. Oh my God, Salah this, Salah that. Everybody is talking about Salah. Let's make a video about Salah. I don't give a fuck about Salah. I don't give a fuck. Ankle injury हुआ ठीक हो जाएगा वो. ठीक है, he's eating good. I want to make a video where haha like natural laugh. That's what I want. Where do you see yourself in this journey of social media creation? Charlie, of course, you do have the seriousness of Charlie and the humor of other great creators. Thank you. Plymouth Argle is here. KV, random question. Your opinion, Didier Deschamps get the just before the World Cup? Because as we know, Zidane will become France coach after World Cup and Deschamps would be free agent, so Madrid would bring him in. Ooh, that's a very, very good offer, Plymouth. But yeah, hit me up on Instagram, hit me up on Discord. 4 in the morning, I am awake. Trust me. Sometimes I'm not like fully awake, but I can be awake for good editing skills. Totally agree. हर छोटे टॉपिक पर व्यू फार्मिंग करना I don't get that. पता है क्या I am the person. I am not trying to undermine what other people are doing. They're right. What they're doing, it is correct. It is the formula. That is how you're supposed to do it. But I don't want to do that. I don't care. Like this whole Connor Bradley situation. I was like,
आई डोंट केयर, चोट लगी है उसको धक्का दे दिया, जो फुटबॉल मैच है, ठीक है, लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं. आई हैड अ व्हाट्सएप आर्ग्यूमेंट, व्हाट्सएप वॉइस नोट आर्ग्यूमेंट, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. But I didn't feel like, oh, I need to go live right now and I need to, oh, tell everybody about it, because everybody already knows. They know it. What am I going to say different? Like this happened, that happened, my opinion is, who cares what my opinion is? I just want to make people laugh. That's the main thing. Like, or I want to do something funny. Or I want to be laughed at. I don't mind being laughed at. I love being laughed at. So, yeah, that's why I have so few videos and shorts. Live stream is like where I can come on and I can just be myself. So that's fun. Making a video, like, and I made some really pathetic videos. I'm gonna be honest. All my videos, जितने भी मैंने बनाए हैं, shit. They're dog shit. I'm not even gonna lie. Like I was making it because I felt pressurized in the sense that everybody keeps making videos. I don't ever upload videos. And I was like, oh, I need to do this, and I got really emotional. I was like, ooh, piano music. Ooh, oh my God, people are hating. Oh, who will he love? Who will he hate? What will happen to Adu with his career? Ah, I forced myself to make them. I hate those videos. I don't like a single one of them. Even the Real Kashmir wala video, forced. Shit, garbage. Never should have made it. But it's out there now, so I don't care. Ah, Orbit, hello, हाँ thumbnail देख लिया. It's a good thumbnail. Thank you so much. Appreciate it. विवेक भाई कह रहे I will edit for you मेरे भाई. अरे विवेक भाई नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे नहीं, नहीं. I will do it myself. I have to do it myself. Otherwise, what is the point of being a creator? I have to edit my own videos. I'm covered in shit. तू भेज तो वीडियोस एडिट करते हैं. चलो ठीक है. लेट्स बट वो एडिट करने में ना देख भाई मजा आता है. लाइक जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, आई कांट डू दैट डिजिटलिस थिंग दैट वो अब मैं आपको इम्प्रिंट कर दूं कि ये है मेरे दिमाग में. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई हैव दिस लाइक वेरी मीम energy. I want to give a meme energy into my videos, like the old school YouTube videos. So I don't know, but yeah, we can try. Uh, I'm nowhere near content creation, but I do consistently talk with moderate creators and would love to talk to you whenever you want to brainstorm any ideas regarding football creation. Sure, absolutely. Not every creator edit their own videos. I know, but those who do know exactly what they want to present to their audience. That is that is the कीड़ा inside me. कि मैं एडिट कर लूंगा, पर ये कैसे होता है, ये छोटा बड़ा एकदम से स्लाइस कैसे करते हैं इसको, एंड देन I have like such an amazing meme library, sounds and audio and video memes. I just can never seem to get it together. Then you should start learning. अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला था. I did start learning and then वो जो कोर्स वाली भाषा होती है मेरे को समझ में नहीं आती. I have like 3 or 4 questions and they go off with like, okay, so the first thing you need to know, and then I'm dead. 9:36. Overall, I don't think it's been a bad day. I think it's been a good day because वो जोमेटो का ऑर्डर खा गया वो बंदा, ठीक है, बट रिफंड मिल गया 2 मिनट में. फिर से खाना आ गया. दैट इज गुड. Bonfire was nice, I would say. Bonfire was pretty good. That is getting pretty late at night and I need to add more firewood. I have an AFCON semifinals team in 40 minutes. All the best, Orbit. Guys, Quiz Side FC. If you guys haven't subscribed to Quiz Side FC, please check out their content.
शिट कंटेंट, मेसी को हर्ट पे डाल देते हैं बट द बंच, द पीपल, they lovely. I love those guys. They're good people, nice people. They deserve support. They deserve some love. So please check them out. Can totally relate learning something practically and while listening to someone. Yeah, I agree. मतलब मेरा तो मन करता है कि यार वो पुराने टाइम में वो जो ट्यूशन के लिए नहीं बुलाते थे कि इधर आ और मेरे को दिखा, इधर आ सेटअप कर मेरा, इधर आ लैपटॉप का सेटअप ठीक कर मेरा सारा का सारा। लाइक वो दिन खत्म हो गया यार। लाइक नाउ इट्स लाइक कि आप आओ, 50-60 लोग 100 लोग आएंगे, आप बैठो और ऐसे सुनो, and then they'll just draw these diagrams and write things in their own handwriting, and I'm like, what the, or worse, show PowerPoint presentation. That is the worst. I can't learn like that. What KY is saying, he's editing himself because he wants a personal touch on every videos, which makes his content unique. Thank you for understanding. So I downloaded this meme video and audio library, जहाँ पे मेरे favorite जो meme sounds होते हैं and जो videos होते हैं, but उसको अच्छे से edit and incorporate करना in the video, like कभी कभी मैं कर लेता हूँ। like दारू पी के मैंने एक वीडियो एडिट करा था, I was so happy, मेरे को इतनी हंसी आ रही है, हाँ हाँ, it's so funny, and this is the video जब मैंने अद्वैत का मजाक उड़ाया था fraud वाला, but then I overdid it. ठीक है, I overdid it with the meme and the meme sound, and I was drunk. I was like editing, like, haha, meme sound, meme sound, meme sound, meme sound. Every single cut पे meme sound. So I laugh. मेरे लिए बहुत funny था वो. But I knew कि ये वीडियो चलेगा नहीं, like nobody is gonna watch this. I was like नहीं, publish. अद्वैत कर दो वो तरीके, ये क्या कर रहे हैं? मैं like हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. Plymouth, कह रहा, can we agree with you? It's a really nice skill to have, and it's really fun. The guy I know taught me as well. You know, once you get the hang of it, it took me 3 weeks. Every week, Saturday, Sunday, we'll hit you up tomorrow. Done, Plymouth, done. Please, please do. Take care of it. And guys, memberships be open. They are 29 rupees a month. They're not very expensive. ऑल्सो मैंने टिप्स वगैरह भी चालू कर दिए हैं, इफ यू गाइस वुड लाइक टू डोनेट टू चैनल, पर मैंने अभी लिंक शेयर करा नहीं है, तो वो मैं बाद में करूंगा कभी, आई डोंट नो व्हेन, कभी तो करूंगा. एंड टिप्स का क्या है, आई थिंक विल यूज टिप्स क्योंकि वो इमीडिएटली एंड यूट्यूब कट नहीं लेता है टिप्स का, तो दैट मनी कम्स डायरेक्टली टू मी. तो इनिशियली विल जस्ट यूज दैट मनी टू डू समथिंग नाइस, लाइक maybe buy bird food or maybe buy dog food or cow को अगर आपको फीड करना हो, और something like that, you know, something nice, because किसी अच्छी जर्नी की शुरुआत should be from something, from a noble intention. एंड में अगर मैं if I become a capitalistic pig, it's your fault. गलत बात, नहीं 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 नहीं. The idea is कि we should as a content creator, what my dream is कि 50% I can sustain my life and 50% I can help other people. That is my content creator से अगर मैं mission अगर मैं निकालना चाहूँ तो that would be my mission. And doing what I love, helping others and helping myself. I can't believe that I have a freedom to do that. Such a wonderful thing. मेरे फोन की बैटरी कितनी है? 1 सेकंड आया. पावर बैंक है मेरे पास, मैं चार्ज करना हूँ. ये लो आग देखो.
आपकी डाइट को मिला पाए, पानी से पी लेना। Shit, I can't charge the phone. I can't charge the phone. I'll have to take the mic off. मैं फ्रंट कैमरा कर लेता हूँ. I hope that doesn't mind people. तब मैं कर सकता हूँ. क्वालिटी थोड़ी सी हो जाएगी. Now you're gonna have to look at my ugly face. पर फोन चार्ज हो जाएगा. I agree. ये शुरू शुरू की चैट्स क्यों आ रही है? Power bank on. ये लोग आग देखो. यप, यू हर्ड इट राइट. यू आर लाइव ऑन केवी भाई स्ट्रीम. आग फिर बुझ रही है. बुझ रही है. Oh yeah, because it's very cold. It's not that cold. If I mean, if you guys are in US, Canada, like that is cold. That is really cold. कैसे घुसेगी अंगीठी में? ऐसे. नहीं, ना. This is not. Yeah. अभी मैं एक शो देख रहा था, फ्रीडम एट मिडनाइट करके. हैव यू गाइस सीन दैट शो? फ्रीडम एट मिडनाइट. It's about independence and everything. I don't know if you guys are interested in history. I've done an MA in history, by the way. Like the yak. So good. Burnt stream or what? No, it's totally fine. What's it? Old Monk has an improved version, 20-year-old aged. Obviously, should be available everywhere over there. Recently, sorry if you can't hear me. I'm just reading your chats from here because ये बहुत ये अपडेट नहीं कर रहा है chats को. ठीक है तो
पे अगर मैं क्लिक करूँ ना उससे भी कुछ नहीं हो रहा. I'm gonna read your chats from here. I'll address it properly, but I'm gonna have to read your chat from here. Of course, I love such topics. Should be available. It's on Sony Live. Sony Live करके एक app है. It's available there. Uh, हमारा should be available at least ठेकों पे, but don't know दिल्ली होगा definitely. My dad was in the Air Force, so still. Oh my Tauji retired from the Air Force. We might know each other. I don't know. So my dad was in the Merchant Navy. My Tauji was in the Air Force, and my chacha is a doctor. So yeah, I am I am nowhere close to all of that. I do feel like जो ये YouTube है ना, like this YouTube thing also, it's like for me personally, like everybody in my family has something. Like everybody, they are either doctor, pilots, um, army, businessmen, something like that. And this YouTube thing is something that I made on my own, right? And I would love this to work because then I could say that this I made. Nobody else helped me, not my family, no my connections, nothing. I made this. I did this. I want something. And that is why I do YouTube also. Because it would give me immense pride if I did something on my own. मेरा सपना था हमेशा से इंडिया के लिए फुटबॉल खेलना. Pipe dream, I know. My father used to say the same thing. But it was an honest dream. I came close. I won state level for Ajmer, played nationals for Rajasthan. Came very close, but corruption, blah blah, no support from parents. Could never do it. And I had science with biology, by the way, Doctor Sir. So never a chance. And I passed. I got 70% in my 12th with science and bio and playing football. Crazy, right? Did I cheat? Tried to, couldn't. 12th May, couldn't. 10th May, in maths, thoda bahut. Okay, we currently living in Australia, though I certainly plan to move to Europe, UK, or Germany at some point in my life. I gotta tell you, leaving India as soon as possible was the best decision of my life. Plymouth, I can't leave. I can't leave. I can't leave anymore. That decision is no longer possible. I can't leave my family. My sister is in Japan. She's pursuing a PhD. I can't leave. Might sound very old school. I can't leave my mom. I can't leave my dog. I can't leave our house, our business, my responsibilities. I can't leave to lead a better life because I've made a better life for myself right here at home. I know it sounds oh, wow, so preachy, but I had a shot at my dreams. I took it. I failed. Couldn't play for India. Was never gonna happen anyway. I never had a shot at academics. I'm lucky to get a good college in IHM Bangalore. Tried to get a job. Tried to do the job. Job sucked. It wasn't where I belonged. And I was. How long can you just stay in that corporate shit environment? That people don't respect you. Everybody's fucking each other. Or गांड चाटो एक दूसरे की. You can't live in that sort of environment. It's horrible. I
I just couldn't do it anymore. I did it till 2022. Then I was just like, when they asked me, like, offices are open, come back. Like, I can't come back. I can't do that. So I started working from home. Uh, Tried it for a while. Then I just started doing like these teaching jobs, soft skills trainer, corporate trainer, uh, things like that. I'm okay. I'm happy. I'm happy. That's what matters. I mean, was I like the, do I want to be the biggest, baddest cat on the alley? Nah, I don't want to be that anymore. It's not my ambition. Okay, keep going, and I still believe the numbers don't do justice to the amount of footballing content and knowledge you have. Plymouth, I can't the land where my parents were brought up, and obviously I want to stay close to them, and I want them to feel as relaxed and close to their roots post retirement. My mom has no one. Like, if I leave, she'll be. Andy says I'm moving back to India this month for good. I think that is going to be the best decision. Charles says Yuri bro's cat name is Meow. Sala, find a name for yours also. My dog's name is Dara, and Yuri knows this. Yuri knows my dog's name. Only con is staying up late night watching Arsenal games. I don't mind that. I love the night. I don't love the day. I love the night. Night is quiet, peaceful. Nobody's saying anything. No, no, can't. हम्म नहीं खाना खाना है उसे पीछे देख खाना खाना है uh, thanks at Manas Manas says she has UK right also she has no one she has a very strong feeling in her life huh exactly so that is why I can't leave because I can't leave I can't leave and I don't want to leave. It's not about the comfort, it's about the responsibility. I don't know. In college, I was very selfish. Even during my career time, I was very selfish. I barely came home during those times. Well, I was like, I'm living the life, right? Then I realized that all the relationships that I've made in my work life, they they aren't permanent. They're not permanent. Work life relationships are not permanent. They you come from one company, right? 4 years you work there. You go to another company. People like two people you remember, three, four, maximum four, even fewer than you would talk to. But that's what it is. Like nothing lasts. Nothing lasts in the world. Oh, by the way, do you know that there is this sun called Betelgeuse that is in the constellation Orion that is going to go supernova and आई डोंट नो कब होएगा वो होपफुली हमारे टाइम में हो जाता है पर नहीं होएगा आई थिंक और बहुत साल लगेंगे उसको होने में when it goes supernova there is going to be a second moon in the night sky. I don't know when that's going to happen though. I don't know if you guys have checked this out. Betelgeuse
not Beetlejuice, but it's spelled more like Betelgeuse, like Betelgeuse, something like that. I don't know how you exactly spell it. It's a pretty cool nightlife. Leaving was never an option for me. I know doctors they're getting shitloads, but I can't leave. I had cleared the USMLE and got an hospital in Texas, but it was never an option. Plymouth Career Manas, you think I don't? I promised my mom and dad once I landed a job in Europe or even India, which I will. I'm gonna ask him to come live with me, but had to make a decision for my career, and I did. See, that is a good, responsible decision. Like you're thinking for everybody, right? You're thinking for everybody in the family, and that is a great decision. And I just wanted. Can I be honest? I'll say about myself. अपने बारे में बोलूँगा मैं. ठीक है? I'm not going to speak for anybody else. I am afraid of taking my parents or my family somewhere where where I don't know what the situation is. I don't know what's going to happen there. I don't know if that is going to be in my control or not. I can keep and control things here. I can control things here. I don't know if I want to take them, my parents, my dog, my sister, my mother to a different country. I don't know what's going to happen. People gonna love us, people gonna hate us. If they accidentally do hate us, what is the political scenario? What is the just the societal scenario? Like what is the situation? I cannot take that risk. That is my worry. My worry. That is what I think about all the time. Like going out is like great, right? Like I have traveled the world myself. I've been to 32 different countries. But do I want to live there? I don't know because that's not my country. I don't belong there. I can assimilate there. I don't belong there. I belong here, right here, in my balcony, my home. Dada. अरे राजीव is saying भाई बकाड़ी set है रात की I'll join you for the watch along. Uh, across Europe. Sound is very less. Sorry for the sound, Manjeet bhai. I'm very sorry for the sound. पर मेरे वो रिमोट शिमोट की जो था वो बैटरी ख़त्म हो गई है तो माफ़ी चाहूँगा मैं थोड़ी सी आई अपोलोजाइज फॉर द साउंड I'm 19 turning 20 in March allowed to make these decisions I don't have those many responsibilities on my back you पता है क्या you are your own master if you feel that is the correct decision take that decision take it and it's so nice for someone to actually speak honestly about what they want. He's speaking about the better. He's speaking about a better life, for not just him, but for his family, for his parents as well. So that is beautiful to hear, and I respect that limit. I'm not saying. I'll just say I'm scared. I'm scared. I'm worried. I'm scared. I'm concerned. मैं डरता हूँ. Bas, I'll just say that. If you would say
uh, that am I a coward? Yeah, I am. I am a coward. When it comes to my family, I'm a very big coward. I have to protect them. Thing is, I will be asking too much from my parents to adjust at new place at this age. I don't want them to adjust. I want them to relax and feel relaxed. बस मुझे कुछ सुन नहीं रहा. मैं एक काम करता हूँ. ओह नहीं, ये तो फ़ोन अभी चार्ज हो रहा था मेरा. इसको तो टाइम लगेगा था. हाँ तो मंजीत भाई, आई एम वेरी सॉरी. आप वॉल्यूम बढ़ा लो. वैसे ही होएगा ठीक. चार्ज तो नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल. वेरी सॉरी फॉर दैट. And guys, don't forget, 12:30 I'm coming back. 12:30 I'm gonna be back for the watch along. ठीक है. तो उसमें भी बातें होती ही रहेंगी. Don't worry about it. और बताओ guys. Manas, how did you become a doctor? Two of my cousins are a doctor. My sister, Chacha's daughter, is a radiologist, and her younger brother is, I don't know, he does something like he cuts legs. He sent me a picture like टांग टूटी हुई थी and वो selfie ले रहा था कटी हुई टांग के साथ. I was like very weirded out by that. But yeah, he's a bit of a that kind of a guy. अरे अभिजीत इज हियर. आज वॉच अलोंग होगा क्या केवी भाई? ऑफ कोर्स होएगा, मेरे चैनल पे होएगा. आई एम गोना बी डूइंग द वॉच अलोंग. आई एम गोना बी अनाउंसिंग इट वेरी वेरी सून. As soon as this bonfire stream has ended. मेरा मन नहीं करा bonfire stream को ख़त्म करने का, पर कभी ना कभी तो ख़त्म करने पड़ेगा. क्या टाइम हो गया? 10 बज गए. 12:30 मेरे को स्ट्रीम करनी है. ठीक है, थोड़ी देर में ख़त्म करना है. ये आखिरी लॉग है, इसके बाद मैं नहीं डालूंगा. He must be an orthopedic surgeon. Crazy. Guys, run for your lives, because if he is an orthopedic surgeon, I mean, the guy sent me a smiling selfie with a cut foot. लाइक ब्लू रैग लगा हुआ था एंड ये बंदे का टांग निकला हुआ था बाहर. एंड ये चाकू लेके ऐसे नहीं, चाकू नहीं, कैंची लेके ऐसे ऐसे फोटो ले रहा, मेरे को भेजा. नहीं 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 नहीं, नहीं. मेरे को इसलिए पता है क्यों भेजा, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ. एंड इज लाइक ये होता है देखो. फुटबॉल तो उसके साथ. Fuck off. Oh, that was dangerous. But he's a very nice guy. I love him. कैसी चल रही है स्ट्रीम? इट्स वेरी चिली आउटसाइड. हाउ चिली डू यू थिंक इट्स हियर? इट इज एक्सट्रीमली चिली. ठंड. इट इज चिली. इट इज चिली. केवी भाई, the thing is, the sense of loss always made me push towards the field of medicine, because whenever I went to the hospitals when I was a kid with my father, I always felt very calm amidst the chaos, I'm assuming. And again, I'm taking off. Friends will join the watch along. Andy, see you, buddy. Glad I found this channel. I'm bored of AFTV. Curtis deluded. K by rocks. Thank you, Andy. We'll see you at 12:30 a.m. Thank you so much for joining. Love you. Yes. What was going in the hospital, and I always used to feel
weird whenever someone passed away, so I was meant to be a doctor. Definitely. डेफिनेटली तो मैं इतनी आसानी से ऐसे बोल देता हूँ जैसे ओ हाँ मुझे सब पता है जैसे ना आई डोंट नो शिट आई मीन आई डोंट नो whose journey led them where, how it happened, and stuff like that. But if you managed it, if you were so passionate and the story that drove you there, I mean that is what gives you like backing. Like उससे तो आग निकलती है. क्या बोल रहा हूँ? Honestly, मेरा सुट्टा पीने का बहुत मन कर रहा है. मैं पीऊंगा नहीं. Ronav is here. Ronav Cooler is here. The Cooler gang, the Barca, the Barca's are here. What's up, Ronav? Plymouth Care. By the way, just to let you all know, if both Madrid and Barca make it past the round of 16, they will face each other in quarterfinals on 4th Feb in semis on 19th Feb. Plymouth Argyle. By the way, just to let you all know, I don't care. I don't care. I don't care. पता क्या कभी कभी I was about to say this. You know, I find this very weird. That ठीक है. Let's talk about this. I'm gonna smoke one too. जब बारसा फैन बारसा के गोल लगते हैं दे गेट वेरी एक्साइटेड बहुत खुश होते हैं वो मतलब हलचल मचा देते हैं बहुत मजा आया आई एग्री विद दैट हाँ भाई सही है पर जब कोई सिटी का फैन यूनाइटेड का फैन आर्सेनल का फैन जस्ट बिकॉज इट्स एल क्लासिको रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एंड कोई भी गोल पड़ लिया अगर ऐसे रिएक्शन ओ माय गॉड व्हाट अ गोल अच्छा गोल है मैं मानता हूँ जैसे विनी का गोल था बढ़िया गोल था ठीक है खतरनाक गोल था आई आई पता है क्या मेरा रिएक्शन क्या था पता है क्या मैं मैच देख रहा था आराम से बिस्तर पे लेटे हुए एंड सब लोग एल क्लासिको रिएक्शन दिस एंड दैट एंड देखो रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना के फैंस के लिए इट इज अ वेरी वेरी बिग मोमेंट ठीक है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है मेरे को क्या लेना देना है भैंचो मैं आई एम एन आर्सेनल फैन आई वांट आर्सेनल टू विन ठीक है पर वहां पे if there is some there is like a I'm sorry to say but there is a PSG fan and he's going like oh my god oh my god what a classico oh my god this is amazing it was amazing wow wow I mean shut up पता क्या I didn't even see the classico I just saw the highlights. I didn't even give a shit about the Classico. Everybody come and take a shit on my face. Oh, why don't you care about this and that? I don't care about your teams. I don't care about Madrid and Barcelona. I don't care about them. वो जीतते रहेंगे उनका अपना अलग दुनिया है ठीक है मेरा अपना अलग दुनिया है मेरा आर्सेनल का दुनिया है यहाँ पे ज्यादातर मौत आती है ठीक है अंधेरा होता है हर जगह अंधकार फैला हुआ होता है एंड कभी कभी हम जीतते हैं जीतने की कोशिश करते हैं एंड जब हम जीतते हैं तो भाई हम पार्टी करेंगे अच्छे से तुम लोगों का हारना जीतना लगता रहता है यार मैं आई डोंट अंडरस्टैंड दैट इमोशन बट ये और अलग चीज है जब बाकी टीम के लोग एल क्लासिको बिगेस्ट गेम एल क्लासिको क्या एल क्लासिको यार व्हाट इज एल क्लासिको दीज डेज कि एम्बापे की बात मत मानो तो मैनेजर फायर हो जाएगा